Good morning, students. In last class, we studied about the population density and factors affecting the population density. Now here start the new topic: population growth. Population growth. Population growth is a major problem in developing countries. India also a developing country, and in India also here the problem population growth. So what is population growth? First of all, the definition of population growth. First of all, the definition of population growth. The change in the size of the population. Here the change in the size of the population in particular of a geographic region in given interval of the time is called population growth. For example, here a this region name is A. Here the total population 1000 in 2001 according to census 2001. After 10 years again here census, and according to 2011 here the population is 1050. So here population increase. What here the change in the population? First year change in the size of the population in a geographic region. The particular geographic region name is A. Clear? In a given interval of time 2001 to 2011 is called the population growth. Here population also increase and the decrease, then population increase called positive population growth, and then population decrease called negative population growth. For example, here B region. In this B region in 2001 population 1000 in 2001, and after 10 years here in 2011 the problems create here, and the population 970 in this region negative population growth. Here the negative population growth, here the positive population growth. Negative population growth, then population decrease, then population increase, positive population growth. So here the inward increase and decrease also can say change in the population. Change हो रहा है ना population में, change का मतलब increase हो या decrease, that is here the change. So the change in the size of population of a geographic region, geographic area in a given interval is called population growth. So here the population definition of population growth, we use here the word change. Also increase here the increase. Also use here the word increase. Here the increase in the size of the population of a geographic region in a given interval time is called the population growth. Is also accurate, but here we use the change word. The change in the population, इससे क्या होगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे. नेगेटिव जब population decrease हो रहा है, and positive then population increase. Clear? Here the definition of the population growth. Now here factors affecting population growth. Factors affecting population growth. Which factors are affecting the population growth? जो population बढ़ रही है, increase हो रही है, इसके लिए क्या reason, क्या factor रेस्पॉन्सिबल है, उनकी हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द डिक्लाइन इन डेथ रेट. डेथ रेट डिक्लाइन होना, हियर द फेवरेबल, अच्छी बात है ना. डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, बट इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? इंक्रीज द पॉपुलेशन. हियर द प्रॉब्लम क्रिएट इंक्रीज द पॉपुलेशन. what was the reason for decrease the death rate? Here the increase the medical facilities, increase the medical facilities, increase the life level of the human, then here decrease the death rate, and decline death rate is the responsible for increase the population. Next here the certainty in the supply of food. Certainty in supply of food also a reason for increase the population, because here the certainty of the supply of food, then here the decrease the famine. ठीक है, जो फेमाइन है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, अकाल नहीं पड़ते हैं, और अकाल नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? Here the whose part of the population affected by the famine, but here the not famine, then increase the population. Then industrial development, the opportunity of the job also complete of the population, then industrial development also responsible for the population growth. Then development of the scientific and the technical knowledge also increase the population, and peace and the security, then the place regions where the peace and the security then increase the population. And last, migration, then one person migrate to the another
region, then population increase. One person migrate to the another region, then increase the population of this region where population settle. ठीक है, तो all these are the factors affecting the population growth. अब हम ना एक बार इसको जो बुक की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, वैसे तो आपको पता लगे क्या, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज वर्ल्ड डेथ कंट्रोल। द मोस्ट पॉपुलेशन रीजन डेथ कंट्रोल, डेथ कंट्रोल होगा, इसका मीन क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज द पॉपुलेशन, ठीक है। इन last 50 years, due to the scientific achievement of the expansion of the health and medical facility, then increase the health and the medical facilities, man has controlled continuous disease and epidemics. Then we control the disease and the epidemics, यानी कि जो महामारियां होती हैं उन पर क्या कर लिया है, कंट्रोल। जैसे अभी क्या हो रहा है, कोरोना, कोरोना से डेथ हो रही नहीं है, महामारी एपिडेमिक है, ठीक है। बट क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम अप्रोक्स 2 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, फिर इससे जो डेथ है वो क्या हो जाएगी ना, लो हो जाएगी। और ये कोरोना की वैक्सीन नहीं आएगी तो क्या होगी, डेथ रेट इंक्रीज होगी, और इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, रिजल्ट इज डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डिक्लाइन इन द रेट। जब वैक्सीन आ जाएगी तो डेथ रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और पॉपुलेशन नहीं आ रही जब तक क्या हो रहा है, इंक्रीज द डेथ रेट। तो बताओ आपको अच्छा है या बुरा है। एक बार हम करें डेथ रेट का, डेथ रेट इंक्रीज होने से पॉपुलेशन जो ग्रोथ की प्रॉब्लम है ना वो क्या हो रही है ना, सोल्व हो रही है। बट ऐसा क्या है ना, फेयर नहीं है। तो फेयर क्या है, डिक्लाइन इन द डेथ रेट। तो क्या होना चाहिए कि ये वैक्सीन जल्दी आनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। देन हियर दिस हैज डिक्रीज द डेथ रेट ऑफ ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट ईयर सेकंड, सर्टेनिटी इन द सप्लाई ऑफ द food, supply of the food. The population growth rate is affected by certainty and the regular supply of food, grain and other food item in the world. तो here the food item complete, या हम कहेंगे कि जो supply of the food are complete for the population. Then mechanical and intensive farming, इसका जो मेन है कि जो ये तो है नहीं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इंक्रीज हो रहा है, हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, और जो मैकेनिकल and the intensive farming, expansion of the irrigation facilities, use of the hybrid seeds and the high quality manner etc have increased agriculture production. So here the use of technical use of the technology in agriculture also increase the production, agriculture production. तो number of the famines also decrease. तो number of the famine क्या हो रहे हैं, decrease. जो death rate इससे भी क्या हो, कम हो रही है, then population increase. Number third, industrial development. Due to industrial revolution, mining, energy production, industries, transportation, trade, technology etc have brought around the develop in the every field. Then here the industry established, then industry established to provide employment. Then the people settled nearby the industrial region, and for complete the necessity of the employees, other population also settle nearby the industries, ठीक है। This is the increase the opportunity of the employment and the normal standard of the living people also improve. Next, number 4, development of the scientific and technical knowledge. New inventions have made human life easier and the comfortable is also the main reason of the increase the population. Clear? And the peace and the security, due to establishment peace and security in the world extent and the boosted up the development of hence population growth. Here the established peace and the security. पहले क्या हो रहा था ना, here the बैटल में पता ना, लेक 2 लेक 4 लेक 10 लेक तक बैटल में जो सोल्जर्स होते थे वो क्या होते थे ना, सोल्जर्स आर डेड इन द battles. But अब क्या हो रहा है, here the total peace and the security, so here population increase, population growth here. Then here the migration due to high birth rate. अब क्या हो रहा है, फ्रॉम विलेज टू, जैसे विलेज टू अर्बन रीजन, यहाँ पे नेसेसिटी कंप्लीट नहीं हो रही, तो पहले नेसेसिटी कंप्लीट नहीं हो रही तो यहाँ पे डेथ रेट क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। लाइफ लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा था इनका, बट अब नेसेसिटी कंप्लीट नहीं हो रही तो विलेजर्स कहाँ पे जा रहे हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग कहाँ पे सेटल हो रहे हैं, रूरल पीपल सेटल इन द अर्बन या cities, they complete their necessity from the cities, so here also increase the population. So what is migration? Here people settle one place to the another place, that is called migration. Then here the one place have not complete the necessity of the human, then they change their place, and these places attract the population where they complete the necessity of the human, yeah, have the many options, and these options
These options are the responsible for the increase in the population. So all these are the factors affecting population growth.